Good morning, children. Let's learn food safety, lesson number 5 of class 7th. So, in that, we have to learn the food storage and preservation. In our last video, we learned about the various methods of food preservation. Okay. With the help of that methods, we can preserve our food items by means of the using various methods such as freezing, smoking, using insecticides or pesticides, then irradiation, use of inert gas, use of preservatives that are some natural preservatives, chemical preservatives, and pasteurization methods we use to preserve the food items. Okay, and it is a good method for the preservation of the food we can use for further if we preserve the food items. Okay, now 16th October, the World Food Day. It is, we celebrate to work towards food security and avoid food wastage. Okay, 16th October. So then national institutions, Food and Drug Administration. This is a government organization that control production and distribution of food and drugs by their standardization. Authority of India, that is FSSAI. It's a standardization, food safety and standardization authority of India, that is FSSAI. FSSAI. So the long form of FSSAI is Food Safety and Standardization of Authority of India. Okay, it's an organization so that has been established as per the Food Safety and Standardization Act as 2006. Okay, so collect more information about FSSAI. Okay, children. Now the next topic we have to learn, that is the adulterization. Adulterization is a very important term. So what happened, sometimes कोई जो food items है जो कि shopkeeper से they use another chemicals or harmful substances into the food to decrease the quality of the food. By decreasing the quality of food, it decreases the quality of the food material to increase its quantity. Food की quantity बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो भी materials add करते, that materials it's the adulterated food items. Okay, that gives harm to the harmful. These some items are harmful for our health. So adulterization means the addition of another substance, addition of another substances to the food atom in order to increase the quantity of the food in raw form. कि फूड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, that is the adulterization. So which results in a loss of actual quality of the food item. So which results the loss of actual quality of the food. So adulterization of food commonly defined as the addition of or the subtraction of any substance to or from food so that the natural composition and quality of food substance is affected. Adulterization is either international or by removing substance to the food, that is the natural properties of food knowingly. So that the existing natural property of the food
it decreases by means of adulterization. So the health of all the people, young and old, poor or the rich, is endangered by the food adulterization. Nowadays आप देखोगे कि त्योहार का है तो जो मिठाई में अंदर मिठाई में भेसल करते हैं, मिठाई में जो मिलावट करते हैं, that harmful for the children, that is harmful for human being also, that gives a health hazard, various health hazards. So different types of adulterants affect our health in different ways. Some adulterant cause abdominal discomfort or poisoning. Food poisoning भी होते, बहुत सारी केसेस सामने आते हैं कि त्योहारों के यूजुअली स्पेशली त्योहारों के दिनों में. So while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time, and even can cause the some cancers also if you take these material, these harmful substances enter in your body, that is the adulterants. So it can cause the health hazards. So some adulterization methods so are given, how to identify कि कैसे उसमें मिलावट की है, कौन से इसमें usually milk. So food material, how will you find out the food has been adulterated? कैसे फूड में मिलावट है, कैसे जो भी चीजें उसमें मिलावट की जाती है. So milk में adulterants, usually the milkman use the water to add into the milk to decrease the quality of the milk and to increase the quantity of milk. मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो मिल्कमैन है वो क्या करते हैं, दे ऐड सम वाटर इनसाइड द मिल्क, क्योंकि वाटर एंड मिल्क इट डिसॉल्व कंप्लीटली. सो if you have to find out the water is present in the milk, so you have to take a taste. कैसे ले सकते हैं, put a drop of milk on a glass and slide it. ग्लास पे डालो एक ड्रॉप मिल्क का, then slide it and slightly incline it to spread the drop. Okay, slightly incline it to spread the drop. उसको थोड़ा सा तिरछा करो, ड्रॉप incline करो. Then कैसे conclusion मिलेगा आप, if the spread mark of milk does not appear milky white, water must be have been added into the milk. आपको पता है कि जो प्योर मिल्क होता है तो थोड़ा सा थिक एंड इट अपीयर मिल्की वाइट. अगर उसमें वाटर है तो क्या होगा, आपको वाटर ही उसमें दिखेगा, कि यू विल नॉट सी द मिल्की वाइट कलर अपीयरेंस. सो दैट मीन्स द वाटर इज एडेड इनटू द मिल्क टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, और उससे क्या होगी, मिल्क की क्वालिटी भी बिगड़ जाएगी, मिल्क की क्वालिटी उतनी नहीं रहेगी. सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग. देन another food material, that is the red chili powder. Usually brick dust is used to increase the quantity of the red chili powder. की लाल जो ईट होगी उसकी जो डस्ट है वो लाल मिर्च में ऐड करते हैं टू इंक्रीज इस क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी घटिया बना देते हैं, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ टू टेस्ट. The red brick is mixed into the red chili powder. So one test is given. Take a spoonful of chili powder in one container. एक इसमें एक बीकर में आप 1 teaspoon chili powder ले लो. Add water up to half of the beaker. इसमें add करो water. Then stir it and leave it undisturbed for the few minutes. Okay. So what happens if a red layer is seen settled at the bottom of the beaker? It must have been adulterated with a brick dust. You know the brick dust is the heavy, it settles down, and if you see the brick red colored dust that settles down, that means the brick dust is added into the chili powder. Okay, so find out. वैसे भी आप जो मसाले यूज करते हो, मार्केट से मसाले लाते हो, उसमें भी भूसा रहता है, या फिर कोरिएंडर पाउडर लाते हो, देन जीरा पाउडर लाते हो, सो दैट अ मिक्स
sawdust is mixed into that. कभी कभी देखो चावल में white color के कंकर रहते हैं. To increase its quantity, they use these harmful materials into the food items to decrease its quality. और जो that gives a health hazards on our body. Okay. Then turmeric powder, हल्दी पाउडर जो मार्केट से लाते हो, सो उसमें मिथानिल येलो कलर का एक केमिकल होता है that add into that. So take a pinch of turmeric powder in a test tube, add a small quantity of water to it and shake well the mixture and add a few drops of concentrate HCl, hydrochloric acid. So what you find? The mixture becomes red on addition of concentrate HCl, and the red color does not appear if methanol yellow is present. Okay. So if methanol yellow is present, so red color does not appear. अगर वो red नहीं होगा, means the methanol yellow is present in turmeric powder. Okay. Then रवा, जो आप सूजी वाला रवा, fine iron fillings are present in that. Pass the magnet through the rava. So you know the iron that attracted towards the magnet. So if you pass the iron filling through the magnet with the help of magnet, then the iron filling attracted towards the magnet, and you will see the iron filling adhere to the magnet. So in this way, we have been find out the adulterated food items. Okay, children. So this is the adulteration. Then food is adulterated in this way too also. Removal of some important components of food. Example, removal of fat content of milk, essence of cloves, cardamom, etc. कभी कभी क्या करते हैं, जो क्लोज होती है, यूजुअली इट इज थोड़ी तीखी लगती है ना क्लोज, उसमें क्या करते हैं, जिसमें क्लोव ऑयल होता है, दैट ऑयल रिमूव फ्रॉम दैट क्लोव्स. सो व्हाट हैपन, जो मेन कंटेंट है क्लोव में से वो निकल जाएंगे, एंड सो दैट फूड आइटम एडल्टरेटेड इन दिस वे. देन मिल्क होता है, मिल्क में जो मलाई होती है, फैट कंटेंट होता है, वो रिमूव कर देते हैं, मिल्क की क्वालिटी बिगड़ जाती है, मिल्क में फैट कंटेंट नहीं होता है. सो इन दिस वे द फूड इज ऑल्सो एडल्टरेटेड. देन मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद द फूड आइटम्स. Sometimes they add some harmful chemicals into the food. मिठाइयाँ जो होती, खोआ होता है, जो अभी आर्टिफिशियल खोआ बनाते हैं लोग, आर्टिफिशियल दूध भी बनाते हैं वेरी बाय यूजिंग वेरियस केमिकल्स. घी होता है, घी में भी जो डालडा होता है उसका मिक्सिंग करते हैं, प्योर घी की क्वालिटी घटिया बन जाती है. या फिर lots of things are added inside the material and it becomes the low quality. Then mixing of some harmful materials like small stones, fine sand, iron fillings, urea, dung of horse, sawdust, etc. So these items are mixed into the material. जो गेहूं में होते हैं, गेहूं में ब्राउन कलर के कंकर मिक्स कर देते, राइस में व्हाइट कलर के कंकर मिक्स कर देते हैं, मीन्स दे adulterated the food item in another way also. Okay, so this is about the adulteration. And do you know, see, in 1954 Parliament passed the Prevention of Food Adulteration Act. Okay, in 1954 Parliament passed the Prevention of Food Adulteration Act. It has been amended from time to time, and the amendment of 1976 provides for life imprisonment for the person involved in adulterating food
with a harmful substance. There are clear directions that food should be properly stored. Packing material should not be endanger the food or medicines, and there should clear legible information on it about the manufacturing date, expiry date, and instructions for the storage. Okay, if you have seen on the packets, जो भी फूड पैकेट्स होते हैं आप लाते हो मार्केट से, कुछ भी अभी जो मिलती है ना चीजें, बटर मिलता है, घी मिलता है, या फिर वेरियस फूड आइटम जैसे कि चिप्स, उसके ऊपर FSSAI का स्टैम्प होता है. देखो, यू सी द पैकेट्स एंड चेक दिस स्टैम्प FSSAI. द स्टैम्प इज प्रेजेंट ऑन द food packets. Also they are written expiry date, manufacturing date, and the storage instructions, how you storage, और उसके ऊपर उसके contents भी लिखे रहते हैं, various क्या क्या यूज होता है उसमें, कैसे स्टोर कर सकते हो आप, that all this information that given on the packets, food packets which you brought from the market. Okay, so this is the, so you observe it, bring up various packets और ऑब्जर्व करो उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. इट्स योर एक्टिविटी. देन ऑलवेज रिमेंबर सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी. आपने देखा होगा कि फ्रूट्स आप लोग मार्केट में देखते हो तो उसके ऊपर शाइनी एक ऑयल जैसे पुट करते हैं वो लोग, और इंजेक्शन से उसके अंदर शक्कर का पानी भरते, यूजुअली इन द वाटरमेलन, मस्कमेलन या फिर पोमेग्रेनेट में. सो दे मेक देम वेरी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव होने से हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने जाएंगे. और देन मिल्क वेंडर ऐड यूरिया to the milk so that it appears to have higher fat content. So urea is a harmful, that if it deposit in our body, a poison spread in our body. So urea is very much harmful for human being. Then shopkeeper change the expiry date sometimes of the food packets and airtight containers to avoid a financial लॉस. जो भी शॉपकीपर से उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो चेंज कर देते हैं कभी कभी, या उसका सील अगर निकला है तो उसको सील कर देते हैं, सो दैट दे. देन कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक द फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव एंड शाइनी. ब्राइट येलो बनानास, जो भी अगर बहुत येलो ब्राइट बनाना अगर मिलते हैं वो मार्केट में कभी भी नहीं खरीदने चाहिए. सो दे यूज सम केमिकल्स टू राइट. मैंगो आपने देखो कार्बाइड से मैंगो आम पकाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. देन फ्रिक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक carbonated soda, phosphoric acid are mixed with the cold drink. जो carbonated drinks होते हैं, Pepsi, Coca-Cola, that are the carbonated drinks. That drinks are also very much harmful. Sometimes they use the harmful chemicals like carbonated soda, phosphoric acid also are mixed with the cold drink. So these are some precautionary methods, and so you should keep us safe from this adulterations. Okay, in this way, so please follow this and collect more information about adulteration. Okay children, so in our next period we will write the question answers of this topic. Okay, so bye everyone.